Python pandas, okay? Also known as pandas. And this is what? This is a Python library for data analysis. ठीक है? Panda is what? Library for data analysis. You know, the name pandas derived from, okay, the name pandas derived from panel data system. Okay? The name pandas derived from panel data system. Now, you know who developed this panda? Python pandas, this library developed by Wes McKee, M-E-C-K-I-N-N-E. He is the developer for this. Now, if I am talking about pandas, so this is what? This is the main point behind this popularity. This is a open source. This is a open source. Open source मतलब no need to purchase, first thing, and second thing is the code is available for everyone. Okay? You can check. जैसे हम लोगों ने अपना कोड लिखा कोई भी, ये कोड जैसे हमारा सबके लिए अवेलेबल है, हम लोग, मैं देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहा हूँ, ऐसे ही जनरल पब्लिक के लिए पब्लिकली जो पांडास लाइब्रेरी का कोड है वो अवेलेबल है, राइट? हाउ कैन वी यूज पांडा? तो आई हैव टोल्ड यू we need to import pandas. By this statement, that library is import in our code, right? And if you want to check this library is installed in our code or not, you need to do one thing only, that import pandas. If there is no error, that means this library is installed with my file. ठीक है? Because this library is not pre-installed library, है ना? ये जो library है वो पहले से installed नहीं आता, इसको आपको additionally install करना पड़ेगा. Now, this is the basic introduction about pandas. Let's start with pandas data structure. Pandas data structure. What do you mean by the pandas data structure? The first thing is, what do you mean by data structure? What do you mean by data structure? Okay. So the meaning of data structure is what? This is a way of storing. Or should I say this is a particular way. Is a particular way of storing and organizing data in a computer in a computer for a
specific purpose. So that can be accessed and we can apply different type of operations on. डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक तरीका है, एक वे है. दिस इज बेसिकली टर्म. ओके, तो एक तरीका है डेटा को स्टोर करने के लिए, और इस तरीके से स्टोर करने के लिए ताकि इन फ्यूचर हम उस डेटा को एक्सेस कर सकें, मतलब देख सकें, प्लस उस डेटा पर हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकें. यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द डेटाबेस, है ना. डेटाबेस आप पढ़ चुके हैं, और वहां पर हम डेटा क्यों स्टोर कर रहे हैं एक प्रॉपर मैनर में, ताकि जब हम चाहें, जिस टाइप का ऑपरेशन हम चाहें, है ना, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, वो हम उस पर अप्लाई करें. ठीक है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पांडास डेटा, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पांडा डेटा स्ट्रक्चर, तो पांडा जो डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों, वो हमें दो, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पांडा डेटा स्ट्रक्चर, तो ये हमें दो बेसिक डेटा टाइप प्रोवाइड कराता है. वन इज सीरीज, SERIE, series, and second one is data frame. One is series and one is data frame. Okay, these are the two basic data structure of Panda. What is the meaning of data structure? By using series, by using data frame, we can store our data. ठीक है, where जो हमारा सीरीज है वो वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल डेटा को शो करता है. वहीं हमारा जो डेटा फ्रेम है वो टू डायमेंशनल, 2D में लिख देता हूँ, टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर को शो करता है. ठीक है. सीरीज पाइथन पांडास का कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? वन डायमेंशन. एंड डेटा फ्रेम कैसा है? टू डायमेंशन. तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वी हैव ए लिस्ट 1 2 3 4 5. व्हाट वी हैव ए लिस्ट? वी हैव array. Now in NumPy we learn about array, right? 1 2 3 4 and so on. And 40. And what about the two dimension? Two dimension array means the data combination of rows and columns. Combination here we have a row or column, either row either column we can say. But if I am talking about data frame, there must be row combination of rows and columns. Okay? There must be combination of rows and columns. If I am talking about why these two data structures we have, one is series and one is data frame. Why we have these two data structures? Okay, because there are some difference. First difference I have told you, one is one dimension, second is two dimension. Second and important is this is homogeneous. Homogeneous, and data frame is heterogeneous. Heterogeneous. What is the meaning of homogeneous? Homogeneous means the data stored inside the series, always all elements are the same. Like we can store only new data, we can store only float data. Means all elements are the same. If I am talking about the heterogeneous, we can store different type of data. Like we can store integer, the same time we can store character, the same time we can store string, the same time we can store float data and different type of.
ओके, तो हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू, तो यहाँ पर जो बच्चों सीरीज की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यूटेबल, MUTABLE, म्यूटेबल, sorry, mutable, and here the value are mutable, both having the same, okay, both having the same mutable, ठीक है। mutable का मीनिंग होता है, एक होता है वर्ड बच्चों immutable, immutable का मतलब होता है कैन नॉट चेंज, ओके, एंड म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, कैन बी चेंज। यानी कि होमोजीनियस सीरीज के अंदर जो डेटा है वंस यू असाइन यू कैन चेंज, डेटा फ्रेम के अंदर भी यू कैन चेंज योर डेटा। म्यूटेबल होता है, दोनों डेटा कैसा होता है हमारा सीरीज और डेटा फ्रेम के अंदर जो हमारा डेटा होता है कैसे म्यूटेबल होता है, यू कैन चेंज द डेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वंस यू असाइन योर डेटा यू कैन चेंज योर डेटा, ठीक है। if I'm talking about a detailed this introduction, okay, just I'm clearing this, so I'm talking about detailed introduction on series data, okay, series data data series data, you know, in the series data structure हम यहाँ पर जो सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन का नाम है सीरीज, SERIES, and this function, you know, the first letter of this function is capital. You must be remember the first letter of this function is capital. And सीरीज जो हमारे पास है, जो सीरीज टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, उसके पास मेनली दो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। इस सीरीज के पास, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीरीज, उसके बाद जो मैक्सिमम दो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। पहला अगर हम बात करें सीरीज के अंदर, तो वो हो सकता है हमारा डेटा, इसको मैं ऊपर ही बोल रहा हूँ डेटा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा इंडेक्स, ठीक है, या इंडेक्स। तो इंडेक्स हमारा ऑप्शनल है, अगर इंडेक्स हम नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम आगे पढ़ेंगे क्या होगा। और डेटा हमारा ऑप्शनल नहीं है। इफ यू वांट टू क्रिएट एक एम्प्टी सीरीज, तो एम्प्टी सीरीज हम कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हमें पॉसिबल है, और अगर हम वहाँ पर कोई डेटा देना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ सीरीज एंड हाउ कैन वी क्रिएट, फर्स्ट वी डिस्कस हाउ कैन वी क्रिएट ए एम्प्टी सीरीज, ओके, दैट, ठीक है, क्रिएटिंग empty series ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, मैं import pandas and I have a series object like I say s equal to SERIES, बिकॉज बच्चों सीरीज जो फंक्शन है वो पांडा का है, पांडास का है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा PANDAS pandas डॉट, ओके, एंड इफ आई प्रिंट s, देन लेट्स रन दिस कोड एंड व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ पर जो हमारा डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो फिलहाल अभी फ्लोट 64 है। डिस्कस क्रिएटिंग एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट वी हैव how can we create non-empty, how can we create non-empty, है ना, non मतलब a series with some data, है, a series with some data, because this is without data, that's why I'm saying this is a empty object and I'm creating series with some data. That means what, we can create series with data। हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकता है a sequence, any sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12, कुछ भी, any sequence। सेकंड पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आपकी ND array, मतलब ठीक है, NP array मतलब numpy array, right? Next we can have another way, क्या क्या हम किस टाइप की हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन डिक्शनरी,
Python dictionary. And another we have scalar, स्केलर वैल्यू. स्केलर वैल्यू का मतलब होता है बच्चों कि वैल्यू सिर्फ एक ही दी जाएगी. एक ही वैल्यू से मैंने दिया 10, डेटा की मैंने 10 दे दिया, तो वही मल्टीपल इंडेक्सेस पर फॉलो की. ठीक है. तो फर्स्ट वी डिस्कस सीक्वेंस. कि सीक्वेंस किस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. सीक्वेंस सीरीज हम किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं. तो लेट मी शो यू. Creating non-empty series object with Python sequence. Python. Okay. So I need to import pandas, and I can create alternative names. देखिए, in place of pandas मैं हर बार लिखूँ, मैं यहाँ पर एक alternate name लिख देता हूँ as PD. This is a standard name for pandas. Many places you can see. Okay. I'm creating a Python series. Just I'm creating pd.series, and here I'm passing the sequence list, sequence 1, 2, 3, any sequence I can. Okay. And here I'm printing. I am signing into the S, and I'm printing print S. Okay. यहाँ पर मैंने एक सीरीज ली और .pd.series मैंने इसको यूज किया, and I run this code. Okay. I use 2 commas here. Let's wait. And you can see this is the output. You know, the values in the left side, this value, okay, are called the index. Okay. लेफ्ट कॉलम जो आपका है वो क्या है, हमारी इंडेक्स, INDEX. ओके. और जो आपका राइट कॉलम है, राइट मोस्ट कॉलम है, जो यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है, ये है हमारी वैल्यूज, जिसको मैं बोल रहा था डेट. क्या बोल रहा था? डेट. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था डेट. ठीक है. तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट, आप देखिए मैंने कोई इंडेक्स यहाँ पर नीचे के आगे हम डिस्कस करेंगे. तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, एंड दीज आर द वैल्यूज. Okay. Let me do another example of this. I can do like I can provide, you remember the function range also provides a sequence. Here I am providing, what happened, 0 to 9. 0 to 9 it will return. Okay. And index value 0 to 9. अब क्योंकि ये तो मैंने रेंज वैसे दे दिया है ना, तो यहाँ पर भी इंडेक्स हमारी इस तरीके से आती है. ऐसा भी हम कर सकते हैं. आई एम गिविंग हियर 100, 100 to 100, 110, कॉमा 3 या 2. ठीक है. तो 100, 102, 104, like this we got the sequence. Okay. Like this we get the 100, 100, 204, and 106, and right. So range function we can create a sequence we can create the series by helping the Python sequence. Python sequence मतलब any list we can pass, any type of range we can pass, no problem. Next we can have a series of, okay, character values first. Okay. So I'm passing here a comma e comma A, E, I, O. ठीक है. Here I'm creating data, character data मैंने क्रिएट किया. और यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो सीक्वेंस आएगा, जो इंडेक्स आएगी, वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी. एंड वी कैन क्रिएट ए डिफरेंट वे, मीन्स वी हैव ए different type of data, like A, E, I, O, U, we have a different type of data. And this is also possible, we can create a series with string. Possible, happily possible, no problem at all. We can create a series with string data. Let me write, I'm writing here Python Pandas, and Pandas. Here I'm creating only one data, so the index will be 0 only, and there will be the data 0 and data.
and type of data type is object. You know, the last time data type is int 32 like this. Okay, so Python we can create like this. Is it also possible we can create multiple string, right? How can we create? In a list I can pass Python pandas. Okay, I am writing I comma am comma learning learning means Python pandas like this. I can do it. Okay, so we can got different I am learning Python pandas. You know, the 0 index for one like this. Okay, so we can create series data structure by helping by providing what? By providing string sequence, any sequence we are learning. तो ये सारी जो चीजें थी वो हमारी किस्मत की सीक्वेंस। एक दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को कि हम एरे अगर हम बनाना चाहें, है ना, एरे हम यूज करना चाहें, नमपाई हम यूज करना चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। आई एम क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट विद पाइथन with data as ND. Okay, what I need to do? I need to import NumPy also. Okay, I need to import NumPy also. How can we import? Import NumPy, and the standard name is NumPy and okay NumPy. And I am using ये सेकेंड टाइप है बच्चों जो मैंने आपको बताया था एनडी एरे, और आई एम यूजिंग सीरीज RIES सीरीज, एंड ये तो हो जाएगा हमारा PD डॉट सीरीज, आई एम असाइनिंग टू S. Here I am creating arrange. You know that what is the use of that function? Arrange. It is exactly same as range function, but this function belongs to NumPy np arrange, and here I am passing 3, 30, 20, 2.5, and here I am assigning to some function, some variable arr I am assigning, and in the series here I am passing arr. Okay, the simple way, and I'm printing. You know what about the 3 argument? Arrange function starts from 3 and जाएगा 20-1 से यानी कि 19 तक, and the difference in all numbers will be 2.5. ठीक है, let me run this. Okay, so we can create 3.0, 5.5, 8.0, 10.5, 13, 15 like this. So because I use point array, so that's why the data type will be changed into the float by default. ठीक है, तो ये बिल्कुल अरेंज फंक्शन जो है वो बिल्कुल आपका रेंज फंक्शन की जैसा है, बट जो अरेंज फंक्शन है वो आपका मिलता है कहाँ पर? वो पाया जाता है numpy array के अंदर. That's why I import numpy. Okay, this is the second. If I'm talking about if I specify a series by helping dictionary, so here I am telling what? Creating series object with data as RO. तो NumPy में हटा देता हूँ, NumPy की कोई नीड नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ. ठीक है, डिक्शनरी. तो यू नो दैट कि डिक्शनरी को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? यू नो दैट डिक्शनरी को कैसे स्पेसिफाई करते हैं? तो जो डिक्शनरी को हम स्पेसिफाई करते हैं बाय हेल्प ऑफ कर्ली. ओके, सो आई एम क्रिएटिंग ए डिक्शनरी लाइक इनसाइड द series function series series, or I'm creating dictionary like this, b equal to, and I'm assigning I'm taking like Zen, and column I'm taking how many days in January? 31, comma I'm taking Feb, and how many days in the Feb having 28 generally, and I'm taking March
March having March 30, and I'm taking April, and it's taking right. So like this, we have a dictionary. And how can we create a series by using helper dictionary? SERIES series, and we can pass D here and call this as pd.series and assigning to S, and I'm printing S, है ना? ठीक है, I'm going to assign here your I do F5, यहाँ पर लिखाएगा योर सीरीज और जनवरी 31 फेब मार्च अप्रैल एंड ठीक है। तो डिक्शनरी को हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देखो एक चीज समझने वाली क्या है कि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग थी वो 0 1 2 3 4 5 नहीं आ, कैन यू सी? जो इंडेक्सिंग थी, देखो फर्स्ट कॉलम, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है, रिमेंबर दिस कॉलम, ये क्या स्पेसिफाई करता था? ये स्पेसिफाई करता था इंडेक्स। क्या स्पेसिफाई करता था? ये स्पेसिफाई करता था इंडेक्स। एंड इंडेक्स, इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द इंडेक्स इनटू द सीरीज फंक्शन, लेकिन मैंने इंडेक्स कोई दी नहीं अपनी तरफ से, आगे हम देंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती थी? 0 1 2 3 4, ऐसे होता था। बट एक नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात ये है, और फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि इन केस ऑफ द डिक्शनरी, है ना, इन केस ऑफ द डिक्शनरी, द की, दिस इज द की, जनवरी फरवरी, यू नो, the dictionary is a combination of key and value pair, है ना? ऐसे ही तो होता है डेटा इसमें, की और वैल्यू के केस में। तो यहाँ पर जो की है, डिक्शनरी की जो की है, वो डिफॉल्ट इंडेक्स बन जाता है, ठीक है? डिक्शनरी के केस में ऐसा होता है। तो डिक्शनरी की है वो वर्क करने लगती है आफ्टर कन्वर्टिंग दैट डिक्शनरी इनटू द सीरीज, दे आर वर्किंग एज ए इंडेक्स and the value working as a data. Okay, so understand, the key of the dictionary working as a index automatically if we convert a dictionary into the series, and that value in the dictionary, the value of key 31, value of fab is 28, like this, huh? The value of dictionary keys, that means 31 28, they work as the data if we convert that dictionary into the series. Okay, so this is the notable point for the dictionary. Next, if I am talking about a scalar value, okay, if I am talking about a scalar value, so how can, and this is the last, and how can we convert this? Just wait, just I'm cleaning this. If I am talking about scalar data, स्केलर का मतलब बच्चों मैंने अभी बताया आपको, स्केलर का मतलब जो है यहाँ पर वो है एम्प्टी, है ना? स्केलर का मतलब है सिंगल, सॉरी नॉट एम्प्टी, सिंगल। ओके, स्केलर का मतलब क्या है? सिंगल, भी मैंने आपको। तो अब हमें क्या करना है, एक सिंगल, है ना, एक सिंगल बेस, एक सिंगल वैल्यू के बेस हमें नंबर ऑफ सीरीज, एक सीरीज क्रिएट करना है, ठीक है? सो वी हैव, like I have S1 equal to S dot PD dot series. First I am taking value 10 comma, the second index I am taking index। अब देखिए एक चीज ध्यान रखनी कि वैल्यू प्रोवाइड स्केलर वैल्यू, है ना? तो वहां पर इंडेक्स आर्ग्यूमेंट आपको देना है, ठीक है? इंडेक्स आर्ग्यूमेंट आपको क्या करना है? वहां पर देना है, मस्ट है, ठीक है? मस्ट है। अगर आप स्केलर वैल्यू, जैसे आई एम गिविंग 10, लेट मी चेक, आई एम गिविंग हियर, if any change is not happen, okay, so yes possible if you are providing scalar value, there is any index, you must be provide index, क्योंकि अगर आपने एक दे दी वैल्यू तो वो एक ही करके दिखा देगा। बट इफ ए सेम वैल्यू को आप मल्टीपल इंडेक्स में चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स पास, ठीक है? सो आई एम पासिंग हियर index in index equal to and I'm passing range, I'm passing 10, you can see I'm passing 10. So what type of index function will got? Index function will get 0 1 to 9, है ना? And every 9 location the value will be same,
10 10 10 10 10. This is called a scalar series, है ना, scalar value should I say. Scalar series is scalar value because जो हमने यहाँ पर बनाई है, ओके, यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ with data as SEANCR, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने बनाई है वो देखिए सारी जगह पे वैल्यू सेम है, and we can create like S1 okay, and we can create another one is I'm giving few less in this, so we can check in the same page. Here I'm giving index, okay, and here I'm providing 200 120 the scalar value, and I am providing range from start from 0 या फिर 1 से start हो range I am providing from my side range 1 to 4 and the difference is 2, okay? And here I am providing S1. This is possible. Series logic, right? I'm giving. Okay, invalid syntax. What the issue? आइडियल। देखिए फर्स्ट वाला जो है उसमें 10 10 थी, दूसरे में 20 20, एंड यू कैन सी 0 1 2 क्योंकि मैंने वहां पर कोई भी इंडेक्स जो दिए वो सीक्वेंस में दिए। सेकंड वाले सीरीज जो मैंने जनरेट की है 1 4 2, तो यहाँ पर मैंने सीक्वेंस अपने हिसाब से दी कि 1 से स्टार्ट हो, फिर 2 का गैप हो 3 आ जाए, और 4 आएगा ही नहीं क्योंकि मैंने 4 को तो लास्ट किया हो, यानी पता चलेगा 4 - 1 3 है। इफ आई गिविंग 10 तो फिर 1 1 3 5 7 ऐसे ऐसे ही चलेगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल I can provide indexing according to not like only this, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि CACI capitals, capitals, right, capitals। और इंडेक्सिंग में मैं क्या देने वाला हूँ, कैपिटल्स। एंड इंडेक्सिंग में मैं क्या देने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग देने वाला हूँ लाइक दिस। आई एम गिविंग हेयर दिल्ली, आई एम गिविंग लखनऊ, and I am giving here Maharashtra, Mumbai. So I giving all the capitals. So you can see here this indexing. You can see the first column based on the index, right? You can see. So here the index are Delhi, Lucknow, Mumbai. Here the index according to me 1 3 0 1 2 3. If I am providing or not providing, it always start from this. So we can provide our own indexing, right, to the series.